Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. And in our today's session, we are going to study about another important movement that is the Harlem Renaissance. As we all know that a lot of questions comes from there in every cycle, from movements or some literary group from these topics. So today we are going to look what is the Harlem Renaissance, what it was, and who were the figures associated with it. What was the purpose of this particular movement? So, Harlem Renaissance was a vibrant cultural, artistic, and intellectual movement. It was a cultural, artistic, and intellectual movement around the 1920s and 30s. And it was named after the Harlem neighborhood of New York City, because it centered the culture and the artistic values and the people living in the Harlem's neighborhood of the New York City. That is why इस particular movement को हम लोग Harlem Renaissance के नाम से जानते हैं. And it was a cultural movement, an artistic movement. It marked the first major flowering of African American literature, music, visual art, and thought, and laid the foundation for future civil rights movements. हार्लेम रेनेसां जो मूवमेंट है हमारा, ये एक अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट बनता है बिकॉज इट वाज फॉर देयर लिटरेचर. ये जो मूवमेंट है ये उनके लिटरेचर के क्रिएशन में फोकस करता है, उनके म्यूजिक में, उनके विजुअल आर्ट्स में, थॉट्स में, ये सारी चीजों को वो फोकस करता है. तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर सिविल राइट्स मूवमेंट्स. तो अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर को ये फोकस करता है. It is sometimes referred to as the New Negro movement as well, because Negro is a term that we generally use for Africans. And this term, New Negro movement, was a term coined by Alan Locke to describe a more confident, self assertive generation of the Black Americans. उनको ब्लैक नहीं बुला के नेग्रो बुलाया जाता था. सो इस पर्टिकुलर मूवमेंट का अगर एक्टिव टाइम पीरियड देखें, इट वाज अराउंड 1920s एंड 30s. 1918 में ये बेसिकली स्टार्ट हो जाता है, 20s में ये अपने पीक में रहता है, और 30s के अराउंड इसका डाउनफॉल होता है. अगर इस मूवमेंट के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, देन इट was because of it led to great migration as well. Millions of African Americans moved from the rural south to the urban north, and in search of jobs and escape from racism. That movement, this particular great migration, influenced the Harlem Renaissance as well. तो जब ये होता है हमारा ग्रेट माइग्रेशन होता है, जिसमें ब्लैक अफ्रीकन्स जो है हमारे, वो रूरल साउथ से अर्बन नॉर्थ में मूव करते हैं, उस टाइम पे साउथ की हालत बहुत खराब हो जाती है, एंड दे फेस द इकोनॉमिकल डाउनफॉल ऑफ देयर इन देयर कंट्री. बहुत मैसिव डाउनफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि अब वो जो लोअर लेवल का काम ये लोग कर रहे थे, दे आर नॉट प्रेजेंट देयर टू डू दैट. ये ग्रेट माइग्रेशन के इवेंट के बारे में एक हमारा शॉर्ट स्टोरी है, उसमें बात होता है. I'm forgetting the name of the short story. It's a very famous short story. उसमें भी ग्रेट माइग्रेशन के बारे में बात किया गया है. ड्राई सितंबर. दिस इज द टेक्स्ट. नेक्स्ट इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन एरा. So African Americans, vegetarians जो थे, returned with the hopes of equality, fueling cultural pride and demands for right. So they return back to the South, but nothing sort of that happens. Economic boom, the roaring 20s saw increased spending on entertainment, music, and literature, which impacted the rise of Harlem Renaissance as well. Black press and journals का setup होता है. Journals like The Crisis, NAACP and Opportunity promoted black voices. ये जो journals थे, इससे एक black peoples को, African Americans को opportunity मिलता है to promote their voices, to promote their culture, literature.
द की फीचर्स ऑफ द हार्लम रेनेसां आर लिटरेचर. इनका फोकस सबसे ज्यादा रहता था लिटरेचर में, लाइक पोइट्री, नॉवल, एसेज, एंड दे all in their text they explore the racial identity, the injustices that they have to face, pride and heritage of the African American peoples. ये अपने novels में अपने literature में ये सारी चीजों का focus करते थे. जैज एंड ब्लूज. जैज म्यूजिक का जो है, जैज म्यूजिक का ओरिजिन हमारा यहीं से होता है, अफ्रीकन से. एंड आपने रैप म्यूजिक सुना है, तो रैप म्यूजिक ऑल्सो कम्स फ्रॉम देयर कल्चर. तो ये जैज एंड ब्लू म्यूजिक, जो ब्लूज म्यूजिक है हमारा, ये एक सिंबल बन जाता है फॉर फ्रीडम एंड रेजिस्टेंस इनके लिए. विजुअल आर्ट का डेवलपमेंट होता है, लाइक आर्टिस्ट एम्ब्रेस्ड अफ्रीकन हेरिटेज एंड मॉडर्निस्ट स्टाइल्स एज वेल. थिएटर परफॉर्मेंसेज में इनको स्पेस मिलता है, ये उन पे फोकस करता है हार्लेम रेनेसां. ब्लैक परफॉर्मर्स, प्ले राइट्स एंड डांसर्स टुक टू ब्रॉडवे एंड क्लब्स. कल्चरल प्राइड में ये बिलीव करता है, ब्लैक इज ब्यूटिफुल, दिस वाज द कोटेशन दे वर यूजिंग एट दैट टाइम. If I talk about the writers and the thinkers associated with the Harlem Renaissance, which becomes an important point for you, is the first one is Langston Hughes. He was a poet of the people. He's also known as the poet of the people because he used to write about them. He's also known for the work The Negro Speaks of Rivers. Harlem, What Happens to a Dream Deferred. So Langston Hughes. Next is Zora Neale Hudson, author of Their Eyes Were Watching God, celebrated Southern Black culture and folklore in her works. Claudie Mackay, he was a Jamaican-born poet of resistance. He talks about resistance in his works. If We Must Die. The work explores the Black experience globally. County Cullen. This writer used to talk about the traditional forms, including the modern themes, blended racial consciousness with lyric beauty. Jean Toomer, इनका वर्क है के 1923 का. ही इज अ मॉडर्निस्ट मास्टरपीस blending poetry and prose. He is known for blending the poetry and prose style together. Alan Locke, he was the editor of the New Negro Anthology. He was also a philosopher who urged cultural self-determination. W.E.B. Du Bois, he was a scholar, activist, editor of The Crisis, advocate of the talented 10th. Nella Larson, novelist of racial identity and passing quicksand. अब आपने पास्ट ईयर्स में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में कुछ कुछ नाम देखा होगा, लाइक W.E.B. Du Bois, ये नाम आया हुआ है. एलन लॉक का नाम हमने देखा है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जोरा नील हडसन और लैंगस्टन ह्यूग्स, इनका नाम पास्ट ईयर पेपर्स में आया हुआ है और डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है रिगार्डिंग हार्लेम रेनेसां. इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं? की फीचर्स पे क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो यू नीड टू रिमेंबर द कीवर्ड्स एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर मूवमेंट. फिगर्स पे बन सकता है, तो you need to remember the important figures associated with it. Apart from the literature writers, we have some musicians associated with Harlem Renaissance as well, like Duke Ellington. He was a jazz composer and band leader at the Cotton Club. Louis Armstrong. He was a trumpeter and jazz legend. Bessie Smith, Empress of the Blues. Billie Holiday, blues and jazz singer. The major themes that Harlem Renaissance used to focus was racial pride and identity. इनके सारे वर्क्स में अपने प्रमोट करते थे ये racial pride and identity. That is the celebration of African American culture and history. Social injustice पे ये लोग बात करते थे. Protest against racism, lynching, segregation. Empowerment की बात करते थे. Encouraging Black Americans to express themselves freely. हेरिटेज की बात करते थे, कनेक्शन ऑफ अफ्रीकन रूट्स एंड डायस्पोरिक आइडेंटिटी. डबल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं W.E.B. Du Bois. ये इनका आइडिया था डबल कॉन्शियसनेस का, आइडिया ऑफ डुअल आइडेंटिटी, बीइंग बोथ ब्लैक एंड अमेरिकन. इस पे क्वेश्चन बना हुआ है. ड्रीम्स एंड लिमिटेशंस, ये लोग होप्स एंड फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं. हार्लेम रेनेसां से कुछ हमारे इंस्टीट्यूशंस एसोसिएटेड है, लाइक द कॉटन क्लब. इट वाज अ वाइट्स ओनली वेन्यू फीचरिंग ब्लैक परफॉर्मर्स. द क्राइसिस, NAACP's journal edited by Du Bois.
Opportunity, it was a Urban League magazine promoting young black writers. The Apollo Theatre, it was a legendary performance venue. HBCUS, historically black colleges and university nurtured talent. So these are the some important institutions associated with Harlem Renaissance. Legacy of the Harlem Renaissance. हार्लेम रेनेसां ने क्या छोड़ा है? सिविल राइट्स मूवमेंट हुए, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल फाउंडेशन फॉर लेटर एक्टिविज्म, इन्होंने इंस्पायर किया है लोगों को. अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर के लिए एक ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं. दे ओपन द डोर्स फॉर फ्यूचर ऑथर्स लाइक टॉनी मॉरिसन एंड माया एंग्ल्यू. ये दोनों राइटर आपके नेट पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है. Black global consciousness, they inspired the Pan Africanism and anti colonial movements worldwide. And cultural recognition, they helped shift mainstream attention towards African American voices as well. तो एक culture recognition देने का try किया है इन्होंने. So if I summarize the whole Harlem Renaissance, the Harlem Renaissance was more than a literary movement. It was a revolution of identity, expression, and resistance. It helped in reshaping how Black Africans saw themselves and how the world saw them through their culture, that is poetry, jazz, painting, politics. It aimed space for the African Americans' brilliance on the global stage. This is what the whole Harlem Renaissance movement was about. I hope that all the points are clear to you. Now no there will be no space for any doubt regarding Harlem Renaissance ever in your life. इस वीडियो को अच्छे से वापस 2 बार 3 बार आप देखो. After you will watch it for 2 to 3 times, you will be able to remember the points. And always remember, whenever you are watching a video, jot down the points, write it down, make notes, short notes, according to you using the keywords. That will help you remember a lot of things and it will help you to prepare a short note which you will just need to revise when you will appear in the exam. उस टाइम पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करके, पेजेस को बहुत पलट के, बिकॉज इट विल बी रेडी इन हैंड नोट्स. To get the PPT, you can join my Telegram channel. You'll get the PPT there. The link to my Telegram channel is mentioned in my description. Share the video as much as you can. Subscribe to my channel. Like my videos. With this, I would end to like the session. Have a lovely day, learners.